नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोर के साथ खेलना बंद करो और जेई नीट स्थगित करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग स्लोगन लेके और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए आ चुके हैं। अब तो पेरेंट्स भी आ चुके हैं इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए। विवादास्पद हो चुका है बिल्कुल भी। अब दोनों लोग प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। पोस्टपोन जेई नीट एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं लगातार लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ बिल्कुल भी जो भी आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। नीट जेई 2020 रो अमिड डिमांड टू पोस्टपोन एग्जाम हियर ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कंटेंटियस इशू। तो इसके बारे में हम लोग जो भी विवादास्पद है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, ये जो खबर आई हुई है, देखिए 27 अगस्त 2020 को 10:11 पे, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो लेट हो सकता है, पर जो भी खबर मिलेगा आपको ऑथेंटिक मिलेगा। विथ द एजिटेशन अक्रॉस द कंट्री ग्रोइंग ओवर द डिसीजन टू होल्ड द एग्जाम एमिड द पेंडेमिक, द एनटीए हैज इशू ए स्टेटमेंट सेइंग दैट ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन हैव बीन टेकन टू अवॉइड ए मिस हैपनिंग। तो दोस्तों, ये देखिए आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि सारा प्रिकॉशन आपके साथ दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए और भी विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है, मोर के साथ खेलना बंद करो, जेई नीट स्थगित करो। तो सभी लोग जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं कि एग्ज़ाम को किसी तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाए। न्यू दिल्ली जागरण एजुकेशन देश, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए डिसीजन टू होल्ड द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेई एंड द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एमिड द ongoing coronavirus crisis has caused massive uproar in the country, with parents and students demanding the postponement of the exam. With the agitation across the country growing over the decision to hold the exam amid the pandemic, the NTA has issued a statement saying that all necessary precautions have been taken to avoid a mishappening and has issued guidelines for the candidate appearing for the exam. Facing heat over its decision to hold JEE-NEET 2020 exam amid the coronavirus crisis, the center has issued a clarification and said that it was under constant pressure, constant pressure from parents and students to hold the exam. Notice nothing that the Supreme Court has also said that full academic year could not waste. वो जैसे सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है कि आपका एकेडमिक सेशन जो बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए एग्ज़ाम को देखिए। We have been under constant pressure from parents and students asking why we are not allowing JEE and NEET. The student were very worried in their mind. They were thinking for how long will they continue to study. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said while speaking to DD News. Out of 8.58 lakh students who registered for JEE and 7.25 lakh candidates have downloaded their admit cards. The NTA has said that the safety of all the students and staff is paramount for them and has issued a set of guidelines for the candidate appearing for the exam. According to the guidelines issued by the NTA, the entry and exit of the student will be staggered and they will not be allowed to crowd. Parents and guardians of the candidate will also not be allowed to stay at the examination center after dropping them. कैसे कोई नहीं रहेगा भाई? अगर जिसका बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो वो सेंटर पर क्यों नहीं रुकेगा? रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। नॉन बीजेपी सीएम डिसाइडेड टू ज्वाइंटली मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग पोस्टपोन ऑफ नीट एंड जेई एग्जाम. Meanwhile, Chief Minister of 7 non-BJP states have decided to jointly move the Supreme Court seeking postponement of the exam amid the coronavirus pandemic. According to repeat by news agency PTI, at a meeting convened by Congress Chief Sonia Gandhi on a range of issues ahead a monsoon session of Parliament, the 7 chief ministers agreed to need for filing a review petition urging the apex court to consider its recent order rejecting the postponement of the competitive exam. Congress to nationwide protest on August 28. The Congress has announced that it will hold a nationwide protest for the postponement of JEE-NEET 2020 exam on Friday. Lack of students and parents from across the country are rightfully agitating and demanding to postpone the JEE-NEET schedule to be held the middle of ever bargaining COVID-19 crisis. However, an incentive and
mindless. Central government is moving ahead with the decision to hold this exam despite the obvious risk it hold, said AICC General Security KC Venugopalak. Over 150 academics to PM Modi. Meanwhile, more than 150 academics from various universities across India have written to letter Prime Minister Narendra Modi and urged him to postpone the NEET JEE 2020 exam because of ongoing coronavirus crisis. Youth and students are the future of the nation, but in wake of the COVID-19 pandemic, cloud of uncertainty have gathered over their career too. There are a lot of apprehensive about admission and classes which need to the resolve and earliest, they wrote. NEET JEE 2020 exam. The Supreme Court had last week dismissed a plea seeking postponement of the two exams, saying a precious academic year of student cannot be wasted and life has to go on. While a total of 9.53 lakh candidates have registered of JEE मेंस, तो जो टोटल है 9,53,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है जेई के लिए और 15,97,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया नीट के लिए. 15.97 लाख स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड फॉर नीट. द नीट इज टू बी हेल्ड ऑन September 13 एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेई मेन इन शेड्यूल फ्रॉम September 1 to 6. तो दोस्तों ये जो रही है आलोक सेन शर्मा के द्वारा ये पोस्ट की गई थी जो मैंने आपको खबर सुनाई है. तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ. तब तक के लिए बने रहिए एग्जाम स्टोर पे. गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों.